Open your books, page number 47. G. Open your books, page number is 47. Yes, we were doing question number 5. Now part 3 is left. Take out your pencils and write in neat handwriting. We have to do exercise today and also work too. So be fast. Okay, question number 3. All of you have opened page 47. I am repeating again, page 47. Question number 5. Turn on your cameras. Question number 5, part 3. List some of the effects of the increased production of greenhouse gases by power stations. Okay, इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे क्या पूछा है कि we have to tell some effects of increased production. Increased production कि अगर greenhouse gases बहुत ज़्यादा produce होंगी, excess produce होंगी, then what kind of effect it would have on the environment कि environment पे उन gases का क्या effect होगा. So write down the answer. ये जो आपको यहाँ पर space नजर आ रही है, यहाँ पर आप लोग आंसर लिख लें. white जो space है, you can mark part 3 and start writing. An increased production as it is, write the same line as it is written in the question. An increased production of greenhouse gases. If you have any confusion during the exercise, so you can ask me at that time. You know, बाद में आप कहेंगे टीचर मुझे ये नहीं पता लगा. You can ask me. ठीक है? जी रोहन. Yes. Teacher, I want to ask that you told us yesterday in our class that we will do you will mark us the question about describe how coal is formed. लॉन्ग है ना, तो वो मैं आपको एक्सरसाइज जब कंप्लीट कराऊंगी ना, फिर एक ही दफा लॉन्ग मार्क करवाऊंगी. अभी हम एक्सरसाइज कर लें फिर हम जी. An increased production of greenhouse gases will lead to global warming. LEAD, lead, will lead to global warming. Hurry up students, write will lead to global warming, which will eventually cause, EVENTUALLY, eventually cause, कॉलम डाल के अब आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने हैं उसकी जो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स है ना, यू विल राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स. जी, पॉइंट्स की फॉर्म में आपने लिखने हैं ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अब आपने क्या लिखने, पेज 36 पे वैसे ये मेंशन है, मैं लेकिन आपको बताती जाती हूँ. पॉइंट 1, ice caps to melt. Point number 2, sea levels to rise. Point 3, weather patterns to change. Number 4, more flooding. FLOODING, flooding. More flooding in low-lying parts of the world. Here is next point, larger deserts. जी लूलू लिमान. Students, you have to do it over here.
ये आपकी एक्सरसाइज आपने पहले भी की होगी। आपने एक्सरसाइज जो है आप लोग को बुक पर ही करते हैं। ओके, एक्सरसाइजेस कभी भी नोटबुक्स में नहीं होती। वी नीड टू डू इट ऑन बुक। ओके, सो weather patterns to change, more flooding in low-lying parts of the world, more flooding in low-lying parts of the world। जी रोहान, क्या हुआ? मैंने आपसे पूछना था कि ये जो क्वेश्चन, ये जो 3 पार्ट है, जो इतना बड़ा, ये तो पूरा ही नहीं आ रहा और जो मेरा पेज तो पूरा ही फिलअप है। तो कैसे करें, इसको मार्क कर लें। स्टूडेंट्स यू कैन मार्क इट, ओपन पेज नंबर 36 which will eventually cause के बाद मैंने आपको लिखवाया ना ice caps to melt, पेज नंबर 36 के लास्ट में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लिसन टू मी फर्स्ट, फिर आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इवेंचुअली कॉज तक तो आपने लिख लिया था ना, उसके आगे से आप लोग मार्क कर लें। आइस ये वाला पेज है, मैं आपको ओपन करके भी बता देती हूँ। अच्छा इसमें नहीं, ठीक है। ओके, इट्स पेज नंबर 36 लास्ट 2 पॉइंट्स, आइस कैप्स टू मेल्ट, सी लेवल्स टू राइज, ये आप मार्क कर लें। फिर नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज 37, weather patterns to change, more flooding in low-lying parts of the world, larger deserts, more droughts, crops which grow well in some areas to grow less well, the spread of disease-carrying insects like mosquitoes which live in warm areas. Still here, यहाँ तक आपने जो है बेसिकली इसका आंसर यहाँ तक है, बट इफ यू have no space left then you can just mark it over here. Okay, but you have to learn it. You can just mark it over here on page 36 and page 37. Now if anyone has, yes Nurul Iman, you can ask now. जी नूरुल इमान। यस रोहान। क्या था कि अगर इसको कॉपी पे कर लेते हैं तो हमारे पास ज़्यादा स्पेस भी होगी और ये पूरा भी आ जाएगा। पेज ऐसे गंदा हो जाता है, कॉपी पे कर लेते हैं। नहीं, आपने कॉपी पे नहीं करना, मैंने आपको बता दिया। आप बस इवेंचुअली कॉज तक लिखने के बाद बाकी आप मार्क कर लें, ठीक है। बहुत लंबा है तो आप मार्क कर लें। मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ आप लोगों ने मार्क करना है। ये फातिमा स्टूडेंट्स, जी मैंने पूछना था, इसके सारे पॉइंट्स हमें याद करने हैं। जी सारे पॉइंट्स। फिर अगर कोई आप फॉर एग्जांपल कोई 1 या 2 पॉइंट्स आप भूल जाते हैं ड्यूरिंग पेपर, आपको नहीं याद आता तो इट्स ओके, वो 1-2 पॉइंट्स से इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अभी आपने लिखने और मतलब रन करने सारे ये मार्क कर। एवरीवन हैज मार्क क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 48। दिस इज द लास्ट पेज ऑफ द एक्सरसाइज, पेज नंबर 48। जी मोमिन, यस मोमिन, यू वांट टू आस्क समथिंग? Okay, students, shall we move forward? टीचर, look, it is so. Yes. It cannot be filled here. That is looking so dirty. What? Students, I have told you. Yeah, this question. I have told you that you just need to mark it. अगर आपका नहीं fill up हो रहा तो आप उसको mark कर लें। मैंने आपको बता तो दिया, mark कर लें। पेज नंबर 36 से पॉइंट्स जितने भी हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वो सारे पॉइंट्स मार्क करें, बस लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी ये आपका काम इसी पे ही होना है। अब ये आपका काम है कि आप नीटली लिखें, ट्राई टू राइट नीटली। ओके, अभी आप एक आधी दफा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी आपने किस तरीके से करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 48। We have to do the last question. Okay, the diagram shows how energy can be obtained from sugarcane. Now you are seeing this one is sugarcane and how sugar is produced from this sugarcane. Producing ethanol from sugarcane. Now we are producing ethanol from sugarcane, means alcohol from sugarcane. So number one question, where does the energy in sugarcane come from? Yes, who will answer me?
Where does the energy come from? Yes, Momin. The sun. Yes, From the the sun. energy comes from the sun. Ji, Noor Fatma, what is this process called? To make food by using sunlight energy. Yes. What is this process called of making food using sunlight energy? Fermentation. No, you are using sunlight energy. So what is this process called? Photosynthesis. Photosynthesis. Yes, right. Photosynthesis. Number 2 question. What do the arrows on the diagram show? Students write the answer to this question. अब arrows आपको क्या indicate कर रहे हैं? What do the arrows on the diagram show? Write the answer to the question number 2. The step-wise process. अब ये देखिए नीचे इतनी स्पेस है, आप लोग नंबर 2 मार्क करके नीचे जो स्पेस है वहां पर आप लिख सकते हैं. The step-wise process, step-wise, WISE, wise, step-wise process involved, INVOLVED, involved in the production of ethanol from sugarcane. Ethanol spellings are written. I'm repeating again. The stepwise process involved in the production of ethanol from sugarcane. Okay, now labels. We have to do labeling. Plant juice filtered, and now you have to mark A, B, C, D, E. There are 5 labels, A, B, C, D, and E. So you have to mark it in front of them, labels. G, tell me number 1. Plant juice filtered and heated. Which label is this? A, B, C, D, or E? G, Rohan. Teacher, it's B. तो फिल्टर्ड कहाँ पे हो रहा है? देखिए दोबारा से डायग्राम को अच्छे से. E. फिल्टर कहाँ हो रहा है? E. फिल्टर कहाँ यूज हो रहा है? C. C में. Filter is used in C. So you will write C. G moment next. Extract distilled to give 95% alcohol. G. Okay, Heather, you can tell me. टीचर G. जी मैंने आपसे पूछना था कि ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा. Every lecture is uploaded. तो टीचर जी अब मुझे बताएं. Extract distilled to give 95% alcohol. ये कौन सा point है? A, B, C, D और E? Which point is this? क्या लेबल करें हम इसके आगे? ई. कहाँ पर डिस्टिलेशन कहाँ पर हो रही है? अल्कोहल कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? E. ई The पार्ट. last step. E. Write E. जी अहमद रजा नेक्स्ट बताएं अब आप. Unmute yourself, Ahmed Raza. Energy from sunlight taken in by plant. Yes, which step is this? Yes, Ahmed Raza, unmute yourself. A. A, yes, it's A. Yes, Ruhan, you can tell. Yes. Pieces of sugarcane crushed. B. B, yes, sugarcane की crushing का और ये B. Okay, the last one. Noor Fatma, you can tell. Plant juiced fermented with yeast for several days. Fermentation कहाँ हो रही है? किस step पे हो रही है? D. D, yes, it's D. So students, have you done C, E, A, B, D? Now students, open your workbooks. We have to the book work. अब आप लोग अपनी workbook.
Now you have to open your workbooks, all of you, and neat work must be done. आप लोगों ने pencil से ये करनी है exercises. Don't use pen. Okay? Pens जो है वो आप लोगों ने use नहीं करने. You must use pencils for a neat work. ताकि आप रेजिंग भी हो सकती है. अगर आप पेन यूज कर लेंगे तो वो फिर बहुत खराब काम हो जाता है. So first exercise, open page number 14, chapter number 3 of your workbooks. Okay, students. So now I'm starting. State whether the following statements are true or false. Have all of you opened your books? Yes, Ruhan. Any confusion? No. Then blow down your hands. Yes, Heather. आपको भी कुछ पूछना है? What? Which part? You have to do workbook. Open your workbooks now. It's written over here. Sure. Exercise 14 till 20. Workbook. So my workbook is in bag. Can I take out? Yes. 1 minute. Hurry up. Okay, students. So take out your workbooks. G. Now I'm starting. Energy, number 1, true false. Energy is released from burning fuels in a chemical reaction called combustion. Is it true or false? Is False. energy released in combustion? During combustion. Combustion means, who says false? Yeah. Yes, wrong. Combustion means? Combustion का क्या मतलब? 1 second. Combustion means burning. So, when you burn something, energy is released. It's true. Okay, number 2. Nurul Iman, you will answer. Next, true, false. Breaking chemical bonds in a fuel releases lots of energy. G. Nurul Iman. Yes, Ahmed Raza. True. False, because making of chemical bonds releases energy. जब bonds बनते हैं तब energy released होती है. Okay. Coal, oil and natural gas are called fossil fuels because they contain fossils. Yes, now who will tell me? Raise your hands. G. Rayan. Coal, oil and natural gas are called fossil fuels because they contain fossils. Yes? True? No, it's false. वो fossils इसलिए fossil fuels इसलिए कहलाते हैं because they are obtained from the fossils. इसलिए क्योंकि उनमें fossils नहीं होते लेकिन वो fossils से obtained होते हैं. Okay, Noor Fatma, you can tell the next one. Third one is false. Fourth, sedimentary rocks are porous, which means they are impermeable to oil and gas. False. False, because porous means which is the thing which is having holes. So obviously it will be permeable. It will not be impermeable. Okay, next, burning fossil fuels produces sulfur dioxide, which causes acid rain. Yes, who will tell me? Burning fossil. Yes, Rohan, you can tell. Burning fossil fuels. It's sulfur true. It's Yes, true. true. Yes, last one is true because sulfur dioxide causes acid rain. Okay, now next is MCQs. Which of the following is not a fossil fuel? Raise your hands. जल्दी जल्दी बताना है आप सबने. Yes, Ahmed Raza. Coal, electricity, natural gas, oil. Which of the following is not a fossil fuel? Electricity. Yes, electricity. Okay, the next one. In the last 100 years, the temperature on the Earth's surface has risen by around
10 degrees Celsius, 15 degrees Celsius, 1 or 2 degrees Celsius? G. Momin, you can tell. 2 degree. 2 degrees Celsius. Miss 1 degree. It's 1 degree. In the last 100 years, they are asking now. Yes, it's 1 degree Celsius. आपका जो second है ना, yes, it's 1 degree Celsius. Okay, number 3. Which one of the following gases decreases when coal is burnt? Yes, Umar. Now, Umar, you need to tell. Which gas decrease when जब coal burn होता है air में तो कौन सी gas decrease हो जाती है? Yes, Umar. Unmute yourself for you. Miss, may I tell? Yes, you can. Oxygen. Yes, it's oxygen. So oxygen is decreased. Now, which of the following statements about global warming is true? Deserts will get larger, sea levels will fall, there will be less flooding, weather patterns will stay the same. Global warming के जरिए क्या होगा? Yes, Heather. Desert will get larger. Yes. Deserts will get larger. Deserts will get larger. Okay, next. Which of the following is true? The last statement. Breaking bond in molecules releases energy. Breaking bonds releases energy. Breaking bond in molecules requires energy, or breaking bonds requires no energy. Yes, which yes, Rohan. A. G. D. No. A. It's G. बताओ हमारा. D and A. It's A. Making bonds releases energy. जो आपके अभी true false में आया था ना, जो मैंने आपको false कराया, इसका आप opposite कर लो. Making chemical bonds in a fluid releases lots of energy. जो second वाला true false false करवाया था ना, उसका true one जो है वो ये है कि making bonds releases lots of energy. Okay, now students open page number 15. We have to do the next page. Hurry up. Fill in the gaps with the words in the given passage. So, when animal and plant waste dash, G moment. Now I'm unmuting all of you, so you can answer me one by one. आप लोग मुझे खुद ही one by one बता. When animal and plant waste decays. Yes, the first blank is decays, right? Decays. Spellings जो है वो लिखे हुए हैं, so be careful. A gas called dash is given off. Yes, Rohan. Miss, may I tell? Yes. Methane. Methane. It's methane. Yes, spellings are written, so you can write. This gas can be collected. I have unmute students, all of you. This gas can be collected and used as dash. किस तरह से यूज हो सकती है? I can tell. Yes, Fatma. Yes, teacher. You can tell. Yes. Fuel. Cooking. Fuel. Cooking. Fuel. Some villages in developing countries have dash generators. Okay, villages have which generators? Biogas. Tell. Microbe. Biogas. Biogas generator. Animal waste is put into a tank with a lid. As dash digests microbes. Cooking. Cooking कौन कह रहा है? Rohan. सोचे तो सही what you are seeing. वो क्या आपसे पूछ रहे? What are they asking you? As dash digests the waste. Waste को कौन digest करते? Germs, microbes. So gas is given off. This can be used for dash and heating homes in cold countries. In the last, you will write yes, cooking. Okay, now, students,
Question number 4. We obtain energy by burning fuels. Number 1. Name 2 common fuels. जी बताएं. Natural gas, oil. Natural gas and oil. Good. Oil and natural gas. Write down. Maryam, oil and Petrol. natural gas. Be quiet, students, and write Diesel. oil and natural gas. Can I tell the next? जी बताएं. Coal is a fossil fuel consisting of carbon. What gas in the air is needed for coal to burn? G. Oxygen. Oxygen. Yes. Oxygen. Oxygen. Okay, write a word equation for the burning of coal in oxygen. Yeah, can I tell? Can I tell? Teacher, can I? Can I? Okay, anyone of you can tell. Teacher, Oxygen plus carbon is equals to equal carbon carbon dioxide. dioxide. Oxygen, carbon dioxide. Okay, oxygen plus carbon और आगे आपने क्या Equals to लिखना है? carbon dioxide. Yes. Carbon dioxide. Okay, last question is the atoms and molecules of fuel are held together by chemical bonds. Explain what happens to these bonds when fuel burns. Write down the answer, student. Write down the answer to this question. Yes. When fuel is ignited, the energy is used to break bonds in the fuel molecules. Fuel atoms combine with oxygen to form new molecules. जी ठीक है. Right. When fuel is ignited, energy is used to ignited spellings are written over here. The spellings अगर आपको confusion है तो आप लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं. नजर आ रहा है. When fuel is ignited, energy is used to break the bonds. Energy is used to break the bonds in the fuel molecules. F-U-E-L, fuel molecules, M-O-L-E-C-U-L-E-S, molecules, full stop. Fuel atoms combine with oxygen. Fuel atoms combine with oxygen for new molecules. ये जिन स्टूडेंट्स ने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया हुआ, अनम्यूट योरसेल्फ. मुझे जो है वो पार्टिसिपेशन क्लास में सबसे चाहिए. मोमेंट, उमर, रेयान, हैदर, you are not unmuted. Unmute yourself. G. I am repeating the answer again. If anyone has confusion, when fuel is ignited, energy is used to break the bonds in the fuel molecules. Fuel atoms combine with oxygen to form new molecules. Okay, have you done? Now the next question. The amount of carbon dioxide in the air is decreasing. This is causing the earth to heat up slowly. Now students, the diagram on page number 16, this one, we have to label this diagram. The labels are given over here. Labels जो हैं वो आपकी इधर given है. Heat warms the earth. Some heat escapes into space. Heat from the sun. Some heat is reflected. आपने जो ये 4 labels हैं, आपने इन labels के जरिए इन blocks को fill करना है. ये जो आपको blocks given है ना, 4 blocks, वो आपने fill up करने. You need to fill up these blocks. This is related to global warming. So firstly, who will tell me, okay, what is first label? Means what will come with the diagram of sun? Which label will come with the diagram of sun? Yes, Momin? Heat from the sun. Heat. Yes, heat from the sun. Okay, then an arrow is showing you that the which is like drawn on the right hand side. What is the arrow showing you on the right hand side of the page? Some The label which is escape into space. yes, the label which is yes, the label which is at the top right of the page, right? Some heat escapes into space. Then the label, then this one arrow, as you are seeing, this arrow which is coming back. What is it telling you? Yes, Some who will heat is tell me? Heat warms the earth. back to the earth. Yes, good. ये जिसने बताया, some heat is reflected back to the earth. Now the last one,
which is showing the earth. Which table will come with the earth? Earth के साथ क्या आना है? Heat warms the Heat earth. warms the Heat earth. warms the earth. Forms the earth. Yes, heat forms the earth. Okay, students. Question number 2. What do we call the heating up of the earth? Yes, heating up of the earth is called. Yes, Riyan, you Global will answer. warming. Global warming. Global warming. Global warming. And Umar, next question का आंसर आपने बताना है. Explain why carbon dioxide is sometimes called a greenhouse gas. जी क्यों हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? Because carbon dioxide gas helps the earth to keep warm. Yes, because good carbon dioxide gas helps the earth to be warm. So write the answer. It is good at keeping heat in. Full stop. Just like a glass in a greenhouse. It is good at keeping heat in, just like a glass in a greenhouse. Now question number 4, students. Students, now question number 4 is explain. ये वही जो भी मैंने आपको हमने एक्सरसाइज में आंसर किए वही है. How the heating up of the earth can lead to the flooding of low-lying countries. तो इसमें you will write ice caps. मैं जो उसके पॉइंट्स है उसमें से आप 2-3 पॉइंट्स निकले कि मतलब फ्लडिंग कैसे. लेकिन हमने वो वाले पॉइंट्स लिखने जिसमें हमने ये बताना है कि it can cause flooding. Means it can cause floods. Obviously you will write ice caps melt. कि when the glaciers melt, जो ice होती है, it mixes with it enters into the sea levels rise, and the countries or the areas which are close to the sea, they can be flood. So you will write ice caps melt, comma, sea levels rise. हाँ ये माशा टीवी देख रही थी लेडीबग. Low-lying countries flood. Ice caps melt. Ice caps melt. Ice caps melt. Sea levels rise. So low-lying countries flood. Low-lying countries flood. Okay, students. Now we will do the remaining exercise in the next class. So. Okay, now I want to ask you that how many have you completed your work till chapter number 3? क्या आपने सारे question answers वगैरह complete कर लिए हैं? और अगर अब किसी का कोई काम रहता है तो आप मुझे बता दें ताकि हम 1-2 दिन तक मतलब अपना जो 3 chapters complete कर लिए. Then we will move to the next chapter. So you can tell me if anyone. Umar, why can't you unmute yourself? क्या कोई problem हो रही है? Everyone, I have unmuted everyone. आप लोग पता नहीं क्यों नहीं unmute अपने वो जो नीचे आपको बटन गिवन होता है उस पे आपने क्लिक करना होता है, आप अनम्यूट हो जाएंगे. जी मुझे बताएं कि आप लोगों में से जो है वो मैं 1 by 1 पूछूंगी. So tell me. Yes, Rehan, have you completed your all work till chapter number 3? आपका complete हो गया जितना काम हो गया अभी तक? बस आखिरी वाला चैप्टर रह गया, चैप्टर नंबर 3. Full chapter 3 मतलब कुछ भी नहीं किया अभी? टीचर नहीं, चैप्टर 2 वाला पहले कंप्लीट कर था, अभी चैप्टर 3 शुरू करना है. ओके, जस्ट कंप्लीटेड. अभी जो वीकेंड आ रहा है आप लोगों के सैटरडे संडे, इस पे आप लोग अपना जो है वो वर्क कंप्लीट कर लें चैप्टर 3. ओके, नेक्स्ट रोहान. स्टूडेंट्स आई एम आस्किंग 1 by 1, तो फिर कोई कंफ्यूजन भी है तो पूछ लें. जी रोहान, हरी अप. मेरे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर में करीब 22 पे हूँ. टोटल 38 है. So you have to complete the remaining questions as well. Ji Ahmed Raza, how much you have done? And all the long question answers, I'm also asking about the long question answers. अगर किसी के long question answers रहते हैं तो मुझसे पूछें. अहमद रजा जी. मैं सभी मेरे 8 क्वेश्चन रहते हैं.
Chapter 3? Yes, miss. And what about the long of chapter number 1 and 2? Miss वो कर लिया. Yes, miss. Both chapters? Yes. Okay, next, Noor Fatima. चैप्टर 3 रह गया. कुछ भी नहीं किया चैप्टर 3 का. नो टीचर 10 क्वेश्चंस किए. You have to complete it. अब मैं आप लोगों का मंडे से जो है, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, तो आपने मंडे तक अपना जो है वो वर्क कंप्लीट कर लेना है, फिर ताकि नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर सकें. ओके नूरुल ईमान, अनम्यूट योरसेल्फ. जी, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? आज का काम आपने कर लिया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई आपको? लिख लिया था सारा? यस नूरुल ईमान. Nurul Iman, you have muted yourself again. जी नूरुल ईमान बताएं, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क टिल चैप्टर नंबर 3? लॉन्ग कंप्लीट किए आपने? आई थिंक यू हैव सम इशू विद योर माइक. उमर. जी उमर, अनम्यूट योरसेल्फ. जी मोमिन. Teacher, I have completed all my work to chapter 1, long questions 2, 2 also long question short, and 3 also. All the short question answers of chapter 3 have been done. Yes, teacher. Yes, teacher. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नाउ जी रियान. एक्सक्यूज मी टीचर, मैंने क्वेश्चन नंबर तो चैप्टर नंबर 3 के वो मार्क करवा दें लॉन्ग क्वेश्चन. अभी नहीं मार्क कराए, वो मैं आपको कल मार्क करवाऊंगी. ठीक है ओके. जी अहमद रजा, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? No, miss. So students, now you have to complete your work till chapter number 3. All work, copy work, book work, every work. And if you have any confusion, then you